तो एनीवे आईजीसीसी और जीसी में डिफरेंस ये आ जाता है डायनामिक्स के चैप्टर में कि एक में ठीक है अर्श अली खान आपका भी है, तो इम्पल्स जो है ना और मोमेंटम ये इसमें नहीं है, जीसी में नहीं है। सो आज उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो फिर जिनका आईजीसीएसई है तो आप लोग इसको देख लें, और जीसी में नहीं है। जीसी में भी उन्होंने ऐड किया है 2023 के सिलेबस में, लेकिन ए लेवल्स में है। एनीवे देखें, डायनामिक्स में सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस ये पता होना चाहिए। देखिए, I'll give you a simple example of an object which is held with wire। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि लेबल ऑल द फोर्सेस। ठीक है, लेट्स इसका मोशन इस तरफ है। इसमें सबसे पहले मैंने वेट लेबल करना है। सो वेट इज अ फोर्स दैट एक्ट्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, मैं बाकी फोर्सेस भी लेबल करता हूँ। अच्छा, सो देखिए, वेट इज अ फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से शो करना है। इसके अलावा और कौन से फोर्सेस हैं? ठीक है, अच्छा, सो वेट है, फ्रिक्शन है, व्हाट अबाउट रिएक्शन फोर्स किधर होगा? किसी को आइडिया है? कौन सा फोर्स रिएक्शन है? फोर्स, अपवर्ड्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स? ठीक है, इट इज ऑलवेज 90 डिग्रीज टू द सरफेस। इसको रिएक्शन भी कहते हैं, कांटेक्ट भी कहते हैं, नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके। ठीक है, ओके सर। इसके अलावा हमारे पास टेंशन भी है, which always acts away from the object। तो ये हमारे पास टेंशन की डायरेक्शन है। ठीक है, तो these are all the types of forces they can ask। ठीक है, Sir, what's in contact force? देखें, जब भी एक ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है ना, लेट से आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह दीवार के साथ अटैच है, लेट से, so the object will experience a reaction force from the wall at 90 degrees to the surface। So we are interested in the object actually, कि object पे किधर forces लगते हैं। If it's completely flat like this, तो फिर आपके पास जो object पे force लगेगा it will be upwards in this direction। तो ये हमेशा 90 डिग्री टू सरफेस होता है। ठीक है, तो Okay, ये sir. हमारे पास सरफेस है, ये सारे सरफेस। अच्छा, सो शुड आई मूव फॉरवर्ड, या इसमें कोई क्वेश्चन है? कि कोई भी क्वेश्चन हो? फ्रिक्शन मोशन के अपोज करता है, तो ऑपोजिट टू। ठीक है, ठीक है, शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। अच्छा, देखिए, इसके बाद हमारे पास न्यूटन लॉज हैं। फर्स्ट लॉ आई वोंट राइट, बेसिक आइडिया बस आपको पता हो कि an object at rest will continue to be at rest। An object, if it is moving, it will always move with a constant velocity, which means straight line में ये हमेशा चलता जाएगा unless a resultant force acts on it to change its state। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज के अंदर मौजूद है ये इनर्शिया की वजह से है। ठीक है,
और inertia depends on mass. मतलब ये जो स्टेट का चेंज रेजिस्ट करता है ये मास पे डिपेंड करता है। तो अगर रेस्ट पे है और आप इसमें लाना चाहते हैं तो अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कम है तो ये इजीली मूव हो जाएगा। अगर मास ज्यादा है तो फिर आ, मुश्किल से होगा। इसी तरह इफ यू वांट टू रिटर्न, रिटर्न करने में भी आपको मास पे डिपेंड करेगा। अगर मास कम है तो इजीली आप स्टॉप कर सकते हैं, उसमें वो टेंडेंसी कम होती है। और अगर मास ज्यादा है तो वंस एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव इट विल ऑलवेज कंटिन्यू टू मूव। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ इज अबाउट रिजल्टेंट फोर्स। लेट्स से आपके पास यहाँ से जो ड्राइविंग फोर्स है वो 80 न्यूटन है, अपोजिंग फोर्स 15 न्यूटन है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज 65 न्यूटन। इनका पॉइंट ये है कि यही रिजल्टेंट फोर्स क्या करता है, इट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिजल्टेंट फोर्स के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ। Sir, ठीक in है, which तो ये direction shall the resultant force be in? नाउ इट कम्स डाउन टू द Right ग्रेटर side. फोर्स। हाँ, राइट साइड, जहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा सो ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स दैट साइड, so resultant force to right and acceleration will also be to the right. Okay, sir. ठीक है, so this is all about the second law कि आपके पास whenever there is a resultant force there has to be um, an acceleration. ठीक है, अच्छा, इसी के साथ हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि if resultant force is zero then it means object is in equilibrium. But it doesn't have to be at rest only. दो ऑप्शन हो सकते हैं। लेट से एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट 70 न्यूटन है, उसमें जो रिएक्शन फोर्स अर्थ जो ग्राउंड लगा रहा है वो भी 70 है, लेफ्ट राइट मूवमेंट कोई नहीं है, इट्स एट एवरीथिंग इज बैलेंस्ड विच मींस इट इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि एक एयरप्लेन है, ठीक है, तो एयरप्लेन का अब ये काफ़ी हाई स्पीड से जा रहा है। फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड इस वक्त 12 या 12 से ज़्यादा है, 700 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और इसका जो इस वक्त ड्राइविंग फोर्स है या फॉरवर्ड जो थ्रस्ट लग रहा है वो मे बी 7000 न्यूटन है। लेकिन इसको फ्रिक्शन जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी 7000 लग रही है। ठीक है, इस पे अप थ्रस्ट जो है वो लग रहा है 12,000 न्यूटन और इसका वेट भी 12,000 न्यूटन है। ठीक है, तो ये काफ़ी हाई स्पीड पे जा रहा है लेकिन सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। इसका भी रिजल्टेंट फोर्स क्या है, वो जीरो है, विच मीन्स के The forces are equal. yes, if opposite forces are equal we say the resultant force is zero and we can use the term equilibrium for it, but it has to be moving in a straight line. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए it may be at rest or it may be moving in a straight line at a constant speed. I'll write the word constant speed या velocity. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस हो सकते हैं। Is it clear? Ji, sir.
अच्छा, देखें, यहाँ पे एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ इन फ्री फॉल, जो काइनेमेटिक्स में यूजुअली डिस्कस होता है, लेकिन उसके लिए सेकंड लॉ का एप्लीकेशन क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, तभी आपको क्लियर होगा। देखिए, फ्री फॉल, इफ यू अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू फॉल, तो उसके दो ऑप्शन है, फ्री फॉल इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एब्सेंस में ये होता है कि whether an object is as light as a feather, maybe having a mass of 0.02 kg, or if we have a heavy object of maybe 10 kg, yeah, 110 kg Q now, they both will have same acceleration. So they will fall at the same rate, sir, both of them. Huh. They'll have same acceleration of 10. They'll reach ground at the same instant, maybe after 5 seconds, with a velocity of 10 meters per second. तो feather भी गिर जाएगा और ये ऑब्जेक्ट भी गिर जाएगा। सो पॉइंट ये है कि लाइटर और हेवियर ऑब्जेक्ट्स जो हैं, why do they have the same acceleration? और velocity टाइम ग्राफ इसका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा with gradient equal to 10। तो हर सेकंड अगर 0 है, 1 पे इसकी वैल्यू 10 होगी, 2 पे इसकी वैल्यू 20, 30 at 3 and so on। रीजन ये है कि देखें, एक्सेलरेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड मास। फोर्स जो है वो वेट होता है, ठीक है। इस केस में अगर आपको याद हो, वेट जो है वो mg होता है। तो अगर हम देखें, mass cancels out and acceleration of free fall is always equal to the gravitational field strength of planet। mass का तो रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का mass ज्यादा है, ठीक है, 110 है, तो इसका वेट भी ज्यादा है, तो कैंसल आउट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन दोनों को ही देख लेता हूँ। इसका वेट होगा 1100 न्यूटन और इसका वेट होगा 0.2 न्यूटन। तो अगर मैं, whether I take the feather, which is acceleration is force by mass, weight by mass, इसका भी आंसर 10 आएगा। अगर मैं हैवी ऑब्जेक्ट कर लूँ कि उसका वेट ज़्यादा है, तो इस तरह लगता है कि वो ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ गिरेगा, लेकिन at the same time it has greater mass, again 10 meters per second square। So whether object is light or heavy, they'll all fall with the same constant acceleration, only if the air resistance is absent। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, now we'll talk about presence of air resistance। देखिए, प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस में ये होता है कि सबसे पहले आपने एयर रेजिस्टेंस के डायनामिक्स को समझना है कि एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शुरू में आपके पास एयर रेजिस्टेंस जीरो होती है, क्योंकि स्पीड उसकी जीरो है। So let me write few values।
अच्छा, देखिए, लेट्स से पास एक ऑब्जेक्ट है having a weight of 20 न्यूटन और वो हम अलाउ कर रहे हैं टू फॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो मैं कुछ वैल्यूज बताता हूँ ताकि आपको इसके ट्रेंड्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो टाइम जीरो पे स्पीड जीरो है, वेट 20 है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 20 है, ठीक है। अरबाब हुसैन, जो आप कह रहे हैं ना वेलोसिटी, आप बेशक रिप्लेस कर लें बिकॉज इट्स जस्ट वन डायमेंशन मोशन, तो इसमें इट डजेंट मैटर आप वेलोसिटी कहें या स्पीड कहें, क्योंकि इसने डायरेक्शन वैसे भी नहीं चेंज करनी। सो एक्सेलरेशन शुरू में इसकी 10 होती है। लेट्स से मैं आई हैव जस्ट अलाउड इट टू फॉल, तो it starts with maximum acceleration. After 1 second इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी, which means weight तो 20 ही होगा। Now we have a certain value of air resistance, maybe 4 न्यूटन। एयर रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज एफएससी में होते हैं, ए लेवल्स में भी नहीं है, के वी स्क्वेयर और ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। बट लेट मी अज्यूम अ वैल्यू के स्पीड के इंक्रीज होने से एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। नाउ व्हाट विल हैपन टू द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? जी 14 सर। 16 होगा ना, 20 माइनस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस एंड वेट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट विल बी 16। 16 ठीक yes है, 20 minus 4. हाँ, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो व्हाट विल हैपन टू एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रिजल्ट ओवर मास। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स 16 है ना? Yes sir, mass ठीक है, और मास 2 है। Acceleration will no longer be 10, it will reduce. Do you see the first difference? कि इसमें acceleration remains constant yes sir. और इसमें major difference, acceleration is not constant, it reduces. Let's say अब मेरे पास velocity हो गई 18, क्योंकि अब 8 का difference आया है, weight won't change, air resistance में ज्यादा कर देता हूँ, for example 12 या 14 कर देता हूँ लेट्स से। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 6 Sir, होगा। 6. 6 6 होगा। एक्सेलरेशन विल बी, so acceleration will be 3. acceleration will be 3. So the acceleration has reduced further, 21 हो गया। लेट्स से अब एयर रेजिस्टेंस 20 हो गया। Now the resultant force will be 0. 0 and acceleration will be, जब रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं होगा 0. तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। After 4th second it will continue to fall with same constant velocity. This value
is known as terminal velocity. it is the velocity at which air resistance Is equal to weight. weight and resultant force and acceleration become zero. Zero, yes. जी सर. ये क्लियर है? इसको आपने हवा में स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट रैंडमली कुछ बातें कर रहे होते हैं. ये आपने बहुत क्लैरिटी के साथ बताना होता है कि बेसिकली air resistance depends on velocity. Since it increases, air resistance increases and become equal to the weight of the object. Since resultant force reduces, acceleration also reduces. So the jump is there, but the jump tends to reduce. पहले 10 का jump आया था, फिर 8 का, फिर 3 का, फिर jump नहीं आ रहा. Should I move forward? जी Yes, सर. मैं आप लोगों का. Yes, sir. अच्छा. So ग्राफ सिर्फ इसका देख लेते हैं, then we'll start a new topic in dynamics. इसका जो velocity time graph होगा, it won't be a straight line throughout. So it will be a Initially curve it will be, yes, exactly, it will and be then a a curve. straight line. Yes, it will reduce to यहाँ पे gradient होगा 0 और शुरू में यहाँ पे होगा gradient to be 10. And over here, this very velocity will be the terminal velocity. And acceleration जो है वो it keeps on reducing. तो ये free fall होता है. इसमें पैराशूटिस्ट वाला जो होता है ना, वो थोड़ा सा मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ. अगर पैराशूट खुलता है, the graph drops to another constant value और फिर पैराशूटिस्ट जो होता है, that person lands. तो इसका हम इस तरह शो कर सकते हैं कि this is where parachute opens, this is where parachutist lands. तो यहाँ पे पैराशूट जैसे ही ओपन होता है तो डिसेलरेशन होती है. ठीक है, तो ये आपके पास. अच्छा, तो न्यूटन सेकंड लॉ की ये एप्लीकेशन है जो एमसीक्यूज में आती है. विल टॉक अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, थर्ड लॉ तो ये है कि फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स. ठीक है, लेट्स से अगर हम बात करते हैं किसी भी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल मे बी an object being pushed by a person. ठीक है, तो ये मैं अगर पॉइंट ए देखूं तो फोर्स exerted on object by hand will be equal to force exerted by hand by object on hand. तो आपने ऑब्जेक्ट्स को पेयर्स में कंसिडर करना होता है. To be considered in pairs, which means के F1 will be equal to F2. ये on object by hand, तो ये on hand by object होता है. They are equal and opposite. ये right को था तो ये left को है. इसी तरह अगर हम इसका foot देखें तो ये क्या कर रहा है? This person is trying to push the ground backward.
So the ground in return is pushing the person forward. So this is what happens. कि F3 और F4 equal हैं, ये foot on ground है, which is to the left, और ground on foot है, which is to the right. So you Sir, I need to don't consider two understand. objects at a time. जी? Sir, I don't understand. अच्छा, इसका let me add one more detail. देखिए, आपने कभी नोट किया है कि let's say आप जब चलते हैं या भाग रहे होते हैं, आपका मोशन किधर होता है? If you observe carefully, when you're running, you're trying to push the ground backwards. जी sir. या कार व्हील देख लें. If a car has to go forward, दोनों केस में let's say मोशन मुझे आगे चाहिए. If a car has to move forward at the point of contact with the ground, isn't wheel rotating in this direction? Yes sir. ठीक है. So what is the reason for it? Reason ये है, the amount of force that you exert on the ground, or the amount of the force that a wheel exerts on the ground, will be equal to the amount of force exerted by ground on the foot, या ground on the wheel. So sir, is it like तो ये जो forward, to every reaction there's an opposite equal reaction? हाँ, to every action there is an equal and opposite reaction. Okay sir. ठीक है. Let's say, and it keeps on going. For example, देखें, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ. लेट्स से हेलीकॉप्टर का देख लें. ठीक है, व्हाटएवर. ठीक है, चलो प्रोपेलर ही बना देते हैं. अच्छा देखें, हेलीकॉप्टर ऊपर कैसे मूव करता है? वो एयर पे डाउनवर्ड पुश एक्सर्ट करता है. ठीक है. As a result, it experiences an upward push from the air. तो नीचे पुश करता है तो ऊपर जाते हैं. या लेट्स से इफ यू वांट टू जंप, आप जंप किस तरह लगाते हैं? यू ट्राई टू पुश द ग्राउंड, ग्राउंड पुशेस यू अपवर्ड, सो यू एज अ रिजल्ट. ये बाकी किसी चीज का कमाल नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन. ठीक है. यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन मुझे आता है. स्टूडेंट कहते हैं, सर डोंट दे कैंसल आउट? Well, they don't cancel out because these forces are on different objects. ये फुट पे है फोर्स, ये ग्राउंड पे है. ये तो तब कैंसल आउट होता है कि दोनों फोर्सेस फुट पे होते हैं. अगर आप लेट्स से एक शू है, उसको आगे से भी पुश कर रहे हैं और पीछे से भी पुश, जाहिर ही बात है फिर तो जीरो होगा. लेकिन इफ दिस वेरी शू इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड पे फोर्स लग रहा है. The shoe itself is experiencing only one force, तो ये इसलिए आगे जाता है. They won't cancel out. ठीक है. न्यूटन थर्ड लॉ never cancels out, because in order for the forces to cancel out, they have to be exerted on the same object. यहाँ पे तो दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर एंड एयर है, ग्राउंड एंड फुट है, व्हील एंड. Is it clear? Third law. It seems to be very simple, लेकिन you need to understand in detail. Not unnecessary detail, but a proper application should be very very clear to you. नहीं तो आगे फिजिक्स नहीं समझ आती. लेवल्स में भी बहुत इशू होता है फिर स्टूडेंट्स को. ठीक है. should I move forward to the last part of this chapter? Sure. अच्छा, last part deals with circular motion. Sir, is this the ठीक है. centripetal wala? Yes, exactly. ठीक है. Now
circular motion is a type of motion in which अर्थ का एग्जाम्पल ले लेते हैं. So basically, a satellite is launched perpendicular. This is the direction of motion. So whenever a force acts at 90 degrees to the motion, it causes it to change direction. ठीक है, या मैं इसका सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ. If you look at a top view of a car, if a car is moving forward and you apply a force in the same direction, so it will speed up. But if a car is moving forward and you apply force in the opposite direction, what will happen? Sir, It speed will will decrease. slow down. जी. Speed will decrease. But if you apply a force which is not in the same direction, neither it's in the opposite direction, if you apply a force at 90 degrees to the motion, car will change its direction. ठीक है. So this is what happens कि whenever force is 90 degree to the motion, तो ये circular motion start हो जाता है. ठीक है. So this is what we do in all the types of circular motion. Let's say मैं एक वायर के साथ स्टोन को टाई करूं. First I have to allow it to move, but I'll apply a force perpendicular. तो ये इधर आ जाएगा. I'll still continue to apply a force 90 degrees. तो इस 90 डिग्री फोर्स की वजह से it will continue to take turn and once more. तो ये जो आपके पास फोर्स है, if it continues to be at 90 degrees to motion, we call this an overall circular motion. ठीक है. So this is, if we conclude, कि in case of circular motion, resultant force is towards the center. ठीक है. Resultant force is called centripetal force. Which Sir, is does 90 this degree only to apply motion. to the Earth or what? So basically any object that you see moving in a circle, whether it's an electron revolving around a nucleus, whether it's a stone tied to a wire, wherever you see circular motion, whether it's a car taking a turn around a corner, they are all example of circular motion. जी. ठीक है. Acceleration is also, even an aircraft taking a turn or going in a circular path, they're all example of circular motion. Acceleration is also towards the center. ठीक है. So ये आपके पास जो है एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का, कि फोर्स ऑलवेज बीइंग एट 90 डिग्री टू मोशन. तो इस तरह है कि इस चैप्टर में
सर्कुलर मोशन जो है वो लास्ट टॉपिक है।